Then children, Augustus went to find his smile. Okay, वो अपनी स्माइल ढूंढने के लिए उसने सोचा कि अब मुझे अपनी स्माइल ढूंढने के लिए जाना चाहिए, मुझे कहीं तो ढूंढना चाहिए. So he started to find his smile. So first of all, where did he went? He went to few places. So first place, where did he went, children? He went under a cluster of bushes. Okay, एक क्लस्टर ऑफ बुशेस मीन्स ग्रुप ऑफ बुशेस जो थी वहाँ पर वो गया, स्मॉल ग्रुप जो था बुशेस का उसमें वो गया. एंड वहाँ उसने किससे मिला? ही फाउंड अ रेड शाइनी बीटल. ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बीटल, वो इस बीटल से मिला, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज स्माइल देयर. देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, आफ्टर मीटिंग द बीटल ही वेंट and climbed to the top of a tree. Secondly, he went on the top of the tree, and there he found birds were chirping. Okay, some birds were there in the nest and they were chirping, but again he could not find his smile. Then in the third place, where did he went? He climbed a high mountain, and on that mountain there was a lot of snow and एयर वॉज वेरी फ्रीजिंग. जब आप माउंटेन्स पे कभी जाते हो तो आपको वहाँ पे ठंड लगती है, बिकॉज वहाँ पे स्नो ही होती है चारों तरफ, और वहाँ पे स्नो की वजह से बहुत ठंडा होता है. देन अगेन ही कुड नॉट फाइंड हिज स्माइल, सो ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द सी. ही स्वैम टू द बॉटम ऑफ द सी. वहाँ सी में गया, वहाँ उसको कौन मिला? शोल्स ऑफ टाइनी शाइनी फिश. इकट्ठे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक साथ बहुत सारी छोटी छोटी शाइनी वाली फिश उसको मिली उस सी के अंदर, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज ओन स्माइल देयर. देन नेक्स्ट वे ही वेंट, ही वॉक थ्रू द डेजर्ट. फिर वो डेजर्ट में गया इन द हॉट सन. डेजर्ट में क्या होता है? सिर्फ सन, हॉट सन होता है. ओके, ही कुड नॉट फाइंड हिज स्माइल एनीवे. वहाँ पे भी उसको स्माइल नहीं मिला. देन वो और आगे जा रहा था अपनी स्माइल ढूंढने के लिए कि अचानक से इट स्टार्टेड रेनिंग. एकदम से वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई. कैसे? पिटर पैटर ड्रिप ड्रॉप प्लॉप, ऐसी आवाज के साथ बारिश होनी शुरू हो गई. सो ऑगस्टस डांस्ड एंड रेज्ड एज रेनड्रॉप्स बाउंस्ड एंड फ्लू. जैसे जैसे रेन ड्रॉप्स गिरती चली गई वैसे वैसे उसने रेन ड्रॉप्स के साथ डांस करना और रेस करना शुरू कर दिया था. देन ही स्प्लैश्ड थ्रू पडल्स बिगर एंड डीपर. एक एक पानी के गड्ढों में से स्प्लैश करता हुआ उस पे से, लाइक आप जब छोटे बच्चे होते हो तो आप लोग जब पानी का गड्ढा होता है उसमें छप छप करके चलते हो कि नहीं? जहाँ पानी देखते हो कि इकट्ठा है उसमें और जाके छप छप करके आप लोग उसमें खूब कूदते हो. सो व्हेन यू जंप लाइक दिस, सो ही ऑल्सो जंप्ड थ्रू द puddles and he raced towards a huge silver blue puddle and saw there under his nose his smile. What happened then? When he was going through the puddles, he रेस टूवर्ड्स अ ह्यूज सिल्वर ब्लू पडल. एक जो सबसे बड़ा वाला पडल था उसकी तरफ वो गया, और वहाँ उसने क्या देखा? उस पडल में जो पानी था, पानी में जब उसने अपनी शक्ल देखी तो ही फाउंड हिज स्माइल अंडर हिज नोज. उसने देखा कि उसकी स्माइल तो उसके पास ही है, उसकी नोज के नीचे है. सो व्हेन ही सॉ हिज स्माइल ही वॉज वेरी हैप्पी. ही स्टार्टेड स्किपिंग, जंपिंग. Okay, and he started smiling and ran all the way home. He was very satisfied. He was very happy to find his smile, that it was with him only under his nose, and he went away home. So I hope this story is clear to you all. Now I'm going to explain you the next story, which is of chapter number 2, The Hidden Sun, on page number 12, as you can see on your screen. Okay, so starting with the chapter number 2, Hidden Sun. Please listen to it also very carefully, children. इस story में आपने क्या पढ़ा था? This is a story of a forest, and all the animals in the forest were they were doing all their work. Some were sitting, some were roaming around, and what happened? Suddenly the sun hid behind the hills. Okay, suddenly the sun hid behind the hills and there was darkness everywhere. Each and every
animal was worried. There was a lot of confusion. They could not see each other, and some elephants bumped into the trees. And you all know what is the meaning of bumped, when you don't unknowingly when you hit something. Okay, आपको अचानक से किसी चीज से टकरा जाओ बिना पता हुए, तो that is known as bumped. So little rabbits hopped on the lions. Okay, over the lions. जो rabbits थे वो hop करने कूद के lions के ऊपर जाने लगे. Okay, so in all there was a lot of confusion all around the forest. So the animals had a meeting. They all had a meeting with the lion, as the lion was the king of the jungle, of the forest, and they decided to call out the sun. So first of all, lion decided to call out the sun. Lion ने decide किया कि सबसे पहले मैं sun को बुलाऊंगा, because he was the king of the forest. When the lion roared and called the sun, what happened? The sun did not came out at all. Sun lion की आवाज सुन के बाहर नहीं आया. Then second, who came, children? The elephant. The elephant called out next, and he raised his trunk and trumpeted. He trumpeted. Always, you know, you have studied sounds of animals. So what is the sound of an elephant? Trumpet. Okay, so when the elephant trumpeted, again what happened? Everything was in vain. कुछ भी कोई फायदा नहीं हुआ. The sun did not came out. Then next came the peacock. Beautiful peacock danced and pleaded. Beautiful peacock ने डांस करा, plead किया, उसको request किया sun को बाहर आने के लिए, but nothing happened and sun didn't came out. Then what happened? Like this, many animals came up to call out the sun one after the other, but the sun didn't came out. Then in the last, one rooster, colorful rooster, came out and said that I will try to call out the sun. But all the animals were laughing at him. They started laughing. Why? Because they were thinking that we all were not able to call out the sun. Then how can this little rooster will call out? But as the lion was a fair leader, वो बहुत equal सबके साथ अपना behave करने वाला king था lion, तो उसने उसको भी एक chance दिया, rooster को भी chance दिया कि okay, you can call out the sun. Then what happened? First, when the rooster called out the sun first time, the sun peeped out. sun ने हिल्स के पीछे से थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ा सा झांका. पीप्ड मतलब झांकना, ऐसे आया, as you can see in this picture. Then when all the animals saw that the sun started peeping out, they were all very surprised. They thought कि how is it possible that the roosters called and the sun listened to him? Then second time the rooster's voice was little louder. It was bold. Okay, the voice was very bold. And then what happened? The sun came little more higher. And then in the third time when the rooster called out, the voice of the rooster in the third time was very, very loud. Okay, and when the sun listened to his loud voice, bolder voice, then the sun rose up high and bright. बिल्कुल ऊपर स्काई में अच्छे से